Good evening, learners. I, Vivek Srivastav, welcome you all in today's Health and Paramedical vocational lectures. Presently, I am working in Sharda University Department of Chemistry in Biochemistry, Associate Professor. So, today we will discuss about the topic of the fundamentals of DNA replications. So, before going to start this lecture, we will try to understand what are the objectives of this lecture. Every lecture, every module which you are learning, they have the objectives. So, the objective of the today's lectures are the to understand the fundamentals concept of the DNA replication, which will provide a clear mechanism how DNA replication takes place and what are the enzymes that participate in the process of DNA replications. To explore the biological significance of the DNA replication, that why DNA replication process in a cell in prokaryotic organism as well as in the eukaryotic organism is required. Also, to illustrate the mechanistic details in the sense that how the different type of enzymes, key enzymes of the DNA replication, for example, DNA helicase, DNA polymerases, DNA ligases, how they play a very important role in the mechanistic insights. Also, to address the error correction mechanism. So, what happens actually when the DNA is replicated, there is a chance of the error. So, that error, how that error will be corrected, that will be also understand upon the successfully completion of this module. Also, this lecture will connect to broader topics, that how DNA replication topics related to the cell division process, how DNA replication process is related to the genetics, how DNA replication is related to the different type of mutations that takes place in the DNA molecules. Also, to develop the analytical skills, so that will encourage your thinking, that will encourage your problem solving ability, also in solving the critical questions which is related to the DNA replication process. So, let us discuss about some of the important facts of the DNA replications. So, first of all, the DNA replication is what? Actually, the formation of the DNA from the DNA molecule, which uses an enzyme called DNA polymerases. So, DNA polymerase is the enzyme basically which is DNA dependent DNA polymerase, which require DNA molecule to polymerize the DNA. In this process, it uses the single stranded DNA molecule which is called as ssDNA. So, ssDNA, which is a single stranded DNA that acts as a template DNA during the process of DNA elongation, during the process of DNA polymerizations. So, this reaction usually takes place via the nucleophilic attack on the growing DNA template chain at the 3' group on the 5' phosphate of the new incoming nucleotide triphosphate. So, basically there is a two nucleotides in that process, where one nucleotide will be having a 3' and incoming nucleotide must be having the 5' phosphate, and these two are interlinked by the phosphodiester linkage. The process of DNA replication, it usually takes place in the DNA at certain positions, that is called as origin of replications, and this process is usually bidirectional. So, learners, as you know that DNA is the double stranded molecule, on the both these strands DNA is replicated. So, that is called as it is a bidirectional process, and which takes place at the specific position on the DNA molecule, that is called as origin of replication. So, now
if you see this figure actually, so there is a three ways by which the process of DNA replication takes place. First is what is the conservative mechanism. Conservative mechanism, there is a dispersive replication as well as the semi-conservative mode of DNA replication. So now learners, I would like to tell you here what is exact meaning of conservative, dispersive as well as semi-conservative DNA replication process. So अगर आप इस फिगर को देखें learners, so this is the original DNA molecule which is called as a parental DNA. So what happens when this parental DNA undergo the first round of DNA replication? This will be divided into two molecules. One is what? One is the parental DNA and another is the daughter DNA. So this red one is your what? This red one is your daughter DNA and this blue one is the your parental DNA. Right? Again this will go into the successive round of replication which is called as a second round of DNA replication, where the parental DNA undergo this again same replication process, where one strand will make the parental DNA and on the other hand the another strand will be make the daughter DNA, and likewise the daughter DNA which is formed, this will again divide into two molecules of the DNA replication process. So here what you are seeing actually, conservative means the parental DNA strand and the daughter DNA strand, they will be separated from each other. And in the dispersive, what will happen? In the dispersive you have the mixed type of characters. Mixed type means if you see the replicated DNA in the first generation as well as in the second generation, what you are observing that some portion of the daughter DNA is here, right? Some portion of the parental DNA is here. Again, some portion of the daughter DNA which is represented as a red color here, as well as some portion of the your parental DNA. So you have the mixed type of thing here. And the same again when this molecule of DNA undergo the second round of DNA replication in the second generation, again you will have the same thing, the mixed type of strand which will be having both parental as well as the daughter DNA in the same on the both these strand of the DNA. But if you see the semi-conservative mode of DNA replication, so in the semi-conservative mode of replication what will happen? The original DNA which is called as a parental DNA, the parental DNA molecule when it undergoes the process of DNA duplication, DNA replication, what will happen? One strand will be the parental strand, if you see the blue one here, and the newly synthesized DNA which is called as a daughter DNA which is represented as a red color here. So you have the duplex DNA in which one strand will be the parental and another will be the your daughter DNA. Same is true for here also. So one molecule of DNA when it undergo the replication, it will make its two copy, right? In both the two copy you have one strand is the parental one which is the blue color, and the your second one which is the newly synthesized which is called as the daughter DNA. Here you will have both the daughter as well as parental DNA separated from each other. Now here also you see this DNA when it is again duplicated, it will make two copy of the DNA right here. Now you see the proportion remain same here also, right? This duplex DNA will be having the what one strand is the parental and another will be daughter. Here also I would like to tell you that the parental DNA remain intact. So whatever the generation, like here I told you about the first replication, second replication, third, fourth, in the semi-conservative mode of replication you will be having the parental DNA remain intact.
इसका मतलब क्या हुआ लर्नर्स? इसका मतलब ये है कि डीएनए चाहे जितने भी सक्सेसिव राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में जाएगा, जो पेरेंटल डीएनए है इट विल बी देयर, राइट? और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दिस इज द main mode of DNA replication both in prokaryotic organism as well as in the eukaryotic organisms. So, it is one of the major mode of replication, and this mode of replication researcher have done the research and they have found out that in both the type of organism, prokaryotic organism as well as eukaryotic organism, the replication which takes place via the semi-conservative mode of replication, not by the dispersive as well as the conservative mode of replications. So, now I hope that you understand all the three mode of replication, in which the semi-conservative mode of replication is the common and it is the widely accepted. Now, here I would like to tell you upon some more thing about in the mode of replication you will have another 2-3 modes, like you have the theta replication. What do you understand by the word theta replication here? Theta means the theta symbols actually. Right? Theta. So, if you see this particular figure here, right? So, this basically structure resembles to your Greek letter theta. So, that is why it is calling as a theta mode of the DNA replication. So, this type of replication occurs in the prokaryotic organism like the bacteria, Escherichia coli and some other bacteria, where theta mode of replication occurs. Why it is calling as a theta? Because this structure, as you can see here, this structure resembles to the Greek word letter theta. So, that is why it is calling as a theta mode of DNA replication. So, how exactly it occurs? So, this is the prokaryotic DNA. Prokaryotic DNA is usually your circular DNA. So, as I told you in my previous slides that replication takes place at particular positions. So, that position is called as origin of replication. So, here if you see, this is the whole DNA molecule, but replication is taking place at certain positions here. So, this portion is called as origin of replication. So, here what will happen? At these particular positions, the DNA will be melted. There will be opening of the DNA molecule. So, that opening of DNA molecule, it is because of the enzymes which is associated. There is a helicase enzyme in a cell which actually unwind, which actually open the DNA molecule, and once the DNA is open, it in that bacteria, the structure basically looks like the theta. So, what will happen at this particular position? So, there is a bidirectional replication. So, what will happen? There is a movement like this, there is a movement like this. So, that is what you are seeing here, that the newly synthesized DNA, it is on the red color, right? This one, and the gray one is your parental DNA, red one is your daughter DNA, newly synthesized DNA. And what will happen when this process will be completed? This one DNA molecule is be converted into 2 DNA molecule. So, in which you see there is a one parental DNA, the gray color, the gray one, and the red one is your daughter DNA, gray one is your parental DNA. So, now this again proves the same thing which I told you just now. It is the semi-conservative mode of the DNA replications, which actually usually takes place in the prokaryotic organism like the different type of bacteria, Escherichia coli
another bacteria. So, this is another mode of replication, like your rolling circle replications. So, rolling circle means, first of all, in which type of organism it occurs. So, in the viruses usually such type of mode of replication occurs, rolling circle. So, rolling circle means it basically make the circle structures. That is why it is calling as a rolling circle model. So, in the viruses also, the replication basically start at the particular location, which is also called as the origin of replication. So, here the replication which is actually start, the replication is initiated by a damage on the DNA molecule. So, what will happen? अगर डीएनए में डैमेज होगा तो क्या होगा? डीएनए में डैमेज होगा, इसका मतलब है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में एक दूसरे से अटैच होते हैं, व्हेन द डैमेज अकर्स, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में गैप हो जाएगा. तो जब गैप होगा तो क्या होगा? तो गैप होगा तो एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3' होगा, सॉरी, yes. So, what will happen when the gap will be there? So, one nucleotide will be having the 3' and the another will be having 5' phosphate, right. So, there is a gap, right. So, this gap, it is because of the damage. So, now in the rolling circle replication, what will happen? The DNA synthesis, जो DNA का polymerization है, that will occurs at the 3' positions. Why? Because there is a break here, because there is a damage here. So, what will happen? This 3' it act as a initiation point, it act as a start point. So, what will happen? Here if you see the red color, the red one is the your newly synthesized DNA, right. So, that means here the DNA polymerase will what? It will polymerize the DNA molecule by adding the nucleotides. So, what will happen? The damaged portion will be now, it will be repair like this. Now, you see it is making the completely circle structures. So, that is why it is calling as a rolling circle model. So, what will happen after that? Once the DNA replication is almost going to complete here, now there will be break, there will be cleavage occurs. So, what will happen when the cleavage occurs? So, both these strand, right, the parental and the newly synthesized DNA, they will be separated from each other, right. So, that is called as a linear DNA. So, the linear DNA, it again form the circular DNA. So, there is a called as the recircularization process. So, what will happen? Because of this, it is calling as a rolling circle model. So, now this circle, right, this now act as a template for the synthesis of the double strand DNA, which is called as the complementary DNA strand, and that is how it is completely making the your double stranded DNA molecule. So, that is why it is calling as a rolling circle mode of DNA replication, which actually takes place in some of the viruses. And the third one, it is the linear eukaryotic replications, which takes place in the eukaryotic organism, like the plants, like the different animals, human beings, right. Why it is calling as a linear? Why it is calling as a linear? It is calling as a linear because eukaryotic DNA is the linear DNA, while the prokaryotic DNA is the circular DNA. So, in the eukaryotic organism, you have the multiple origin of replication, right, which is different from the prokaryotic organism. Prokaryotic organism, they have the single origin of replication,
But here in the eukaryotic organism you have multiple origin. So, that means at each origin there is the start of there is the initiation of the DNA replication process. So, what will happen? At each origin DNA replication takes place, there is unwinding of DNA. Unwinding means there is a opening of DNA molecule which produces the replication bubble. Now, here it is the called as replication bubble, right. So, onto this bubble there is a DNA machinery. DNA machinery means your enzymes, protein which participate, which play important role in the DNA replication. So, what will happen? The DNA will be now replicated. So, as you can see here, when it is replicated, what will happen? All the origin they will meet with each other, right, and completely when the process will be completed, it will form the two molecule of DNA, right, in which the one will be parental. Here the gray one is the parental DNA, right, and this is the your red one is the newly synthesized DNA, which is called as the daughter DNA. So, now you can see here again, which is confirming the proof that DNA replication is the semi-conservative mode of replication. That means one strand is the parental and another will be the daughter DNA strands. So, what is the conclusion? So, conclusion is the product of eukaryotic DNA replication are the two linear DNA molecules. So, next we will discuss about in the 5 minutes breaks. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें, शिक्षा
दीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कोई मन चाहा केंद्र चुने स्वयं बने हम सो वेलकम बैक लर्नर्स। सो ब्रेक के बाद आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सो मैं क्विकली समराइज करना चाहता हूँ कि क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया। सो ब्रेक से पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डीएनए रेप्लिकेशन कितने मोड्स के होते हैं और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, और हमने ये भी डिस्कस किया कि मेनली जो रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, व्हाट आर द मोड बाय विच द टेकिंग प्लेस। सो ब्रेक के बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन के पीछे क्या मैकेनिज्म है, कैसे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं when the DNA is elongated, when the DNA is polymerized। तो सबसे पहले इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है लर्नर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है कि एंजाइम जो कि पॉलीमराइज करेगा किसी को, जो कि इलोंगेट करेगा किसी को, किसको करेगा यहाँ पे डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम कैसे डीएनए को इलोंगेट करता है लर्नर्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें एक स्टैंड डीएनए का होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए स्टैंड। ये वाला पोर्शन लर्नर्स, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज टेम्पलेट डीएनए, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए हियर। टेम्पलेट डीएनए यूजुअली डबल हेलिक्स होता है, देयर इज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर देयर। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में ये डबल हेलिक्स विल बी ब्रोकन इनटू टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, और उसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। नाउ यू सी हियर लर्नर्स, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। इसी टेम्पलेट पे हमारा क्या होगा, हमारा ग्रोइंग डीएनए विल बी देयर नाउ, which will be in the form of the nucleotides which are attached by the phosphodiester linkage। So learners यहाँ पे जो P है, P stand for what? P stand for the phosphodiester bond। What is the significance of the phosphodiester bond? Phosphodiester bond ये ऐसा बॉन्ड है, ऐसा केमिकल लिंकेज है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में एक दूसरे से अटैच करता है। नाउ जब डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर स्टार्ट होता है लर्नर्स, तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं प्राइमर सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमर सीक्वेंस। ये प्राइमर सीक्वेंस ये एंजाइम के थ्रू सिंथेसाइज होता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्राइमर को बनाता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए प्राइमेज एंजाइम्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए प्राइमेज, इट सिंथेसाइजेस द primer, right? Now why the primer is required? Primer is required to initiate the process of DNA replication। अगर प्राइमर टेम्पलेट डीएनए से अटैच नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल के अंदर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम alone it cannot start the process of DNA replication, it needs the primer sequence। और प्राइमर सीक्वेंस लर्नर्स डीएनए में कहाँ से आएगा, प्राइमर सीक्वेंस आएगा प्राइमेज एंजाइम से। तो ये जो प्राइमर है, दिस प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमेज एंजाइम। ओके, नाउ लर्नर्स अगर आप देखें यहाँ पे जो प्राइमर का लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, इट इज जी हियर, राइट।
अब जी के पास नाउ यू हैव दी OH, राइट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3-OH। ये 3-OH कहाँ पे है? जो इसका शुगर है, राइट, दैट हैज़ अ 3-OH। अब क्या होगा? नाउ ये वाला हमारा जो सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस इलोंगेट होगा। तो अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज इट विल ब्रिंग द न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑन द ग्रोइंग चेन ऑफ द डीएनए। जब नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसके पास ये 5-फॉस्फेट है। दिस इज दी 5-फॉस्फेट। और यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं लर्नर्स? अगर आप देखें तो देयर आर 3 फॉस्फेट, 1, 2, 3। So there is a third phosphate, this is the second one, this is the first one. So this is called as a nucleotide triphosphate. Triphosphate means molecule will be having 3 phosphate. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे now if you see यहाँ पे अब 3-OH और ये 5' phosphate, इनके बीच में there is a formation of bond. So what will happen when the formation of bond takes place? How the formation of bond takes place? Here the 3-OH of the primer, it acts as a nucleophile, right? Nucleophile की तरह काम करता है learners. तो ये क्या करेगा? Nucleophile will be it is attack on the first phosphate, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा phosphate. तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल बी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? ये बाकी के जो फॉस्फेट हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या होगा? यहाँ पे ये 2 फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। नाउ इफ यू सी हियर द 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दो फॉस्फेट लर्नर्स ये यहाँ से निकल गए। ये कहाँ से आए? ये दो फॉस्फेट हैं। ये 2 फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड से आए लर्नर्स, और इनके बीच में और इसके बीच में नाउ यू सी दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो जो डी था यहाँ पे गुआनिन एंड द थाइमिन, अब गुआनिन थाइमिन के बीच में देयर इज लिंकेज फॉर्म। इसी लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर linkage. So this linkage is called as phosphodiester linkage. Understand? Now the same process will continue. The same process will continue means अब यहाँ पे ये OH फ्री है, राइट। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ पे। अब इस न्यूक्लियोटाइड के पास 3 फॉस्फेट होगा, राइट, 1, 2 एंड 3, और फिर से इसके बीच में और इसके बीच में देयर इज अ लिंकेज अकर्स व्हिच इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड इससे अटैच हो जाएगा T से। तो इसी तरह से क्या होगा? अब ये हमारा चेन एक चेन बनती चली जाएगी, और इस चेन जैसे जैसे चेन बनेगी डीएनए का पॉलीमराइजेशन होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू डीएनए को पॉलीमराइज करता है, जिसमें कि वो एक नया न्यूक्लियोटाइड लेके आता है और डीएनए को पॉलीमराइज करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म, राइट, बाय विच द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइज द डीएनए मॉलिक्यूल। सो लर्नर्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैक्टीरिया में देयर आर 3 मेन एंजाइम्स। इसको ये बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, राइट, डीएनए पॉलीमरेज 1, इट इज डिनोटेड इन द रोमन नंबर, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट। देयर इज अ 4, 5 आल्सो, बट दीज 3 आर दी मेजर। और ये तीनों डीएनए पॉलीमरेज, ये मैं बैक्टीरिया के केस में बता रहा हूँ। I am not telling in the case of the eukaryotic organism. This is only in the prokaryotic one I am telling you.
ये तीनों डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो दे डिफर एमंग दी ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, there are different gene which encode the enzymes, like the for DNA polymerase 1 Pol A, Pol B and Pol C, right. इनका molecular weight जो कि एंजाइम है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, प्रोटीन हैज अ molecular weight, इनका molecular weight भी डिफर करता है. इफ यू सी हियर, राइट. Important thing is here these activity 3' to 5' exonuclease, 5' to 3' exonuclease activity. इसका मतलब क्या है? exonuclease means enzyme which can cut the DNA molecule at the your end portions, उसको हम बोलते हैं exonuclease. अब 3' to 5' या 5' to 3' इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में 3' to 5' डायरेक्शन में डीएनए को कट करता है. 5' to 3' का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में डीएनए को कट करेगा. तो जो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये तीनों पॉलीमरेज में होती है, राइट. डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3. बट जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 में होती है. एंड that makes this polymerase enzyme special enzyme compared to polymerase 2 and 3. Why? Because it has 3' to 5' exonuclease activity. There is also two parameters by which these enzymes differ. One is the processivity, polymerization rate. Polymerization rate का मतलब क्या है कि पर सेकेंड ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो जो इसकी प्रोसेसिविटी है, राइट, it is very high for the DNA polymerase 3. Per second it can add 250 to 1000 nucleotide, and polymerase 2 it can only add up to 40, and polymerase 1 16 to 20 nucleotide per second. So that means इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो DNA polymerase 3 है learners, it is the main enzyme of the DNA replication. Why? Because the processivity rate of this enzyme is maximum. It can add this much number of nucleotide per second during the DNA replication in the prokaryotic organisms. Now here also the processivity rate, so it is for DNA polymerase 1 it is 3 to 200, for DNA polymerase 2 it is 1500, and for DNA polymerase 3 it is more than or equal to 500,000 number of nucleotides. तो ये these are the parameters by which you can distinguish between the DNA polymerase 1, 2 and 3. Among them the DNA polymerase 1 is the special enzyme. Why? Because it has 5' to 3' exonuclease activity, and the main enzyme of the DNA replication in the prokaryotic organism, it is the DNA polymerase 3. Remember that. So now we will discuss after that who discovered the DNA polymerase, right. So the person who discovered the DNA polymerase is the Arthur Kornberg, A. Kornberg. So he is the main person who first time reported the discovery of the DNA polymerase, and the enzyme first he discovered is the DNA polymerase 1. So he first discovered the DNA polymerase 1 enzyme, right. So DNA polymerase 1 it is also called as Kornberg enzyme. Why? Because DNA polymerase 1 it has been discovered by the Arthur Kornberg. So that is why DNA polymerase enzyme is also called as A. Kornberg enzyme. After that उसके बाद DNA polymerase 2 और 3, 4, 5 की डिस्कवरी हुई थी, right. A. Kornberg in the year 1955, and he also received Nobel Prize for the discovery of the DNA polymerase enzymes.
So now learners, after that also I like to tell you, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, राइट, तो डीएनए पॉलीमरेज का एक मैकेनिज्म है, जैसे कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो यूजली उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी मैग्नीशियम आयन इन दी केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम आयन है, अगर आप देखें Mg++ आयन, राइट, ये मैग्नीशियम आयन ये डीएनए पॉलीमरेज का कोफैक्टर है। नाउ कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर इज व्हाट? कोफैक्टर इज नीडेड फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। ये जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको ये बढ़ा देता है। यू कैन से इट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो नाउ ये जो पॉलीमरेज, ये जो आपको ब्लू वाला कलर दिख रहा है, राइट, दिस पोर्शन इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइट, जिसमें कि दो मैग्नीशियम आयन उस डीएनए पॉलीमरेज के एस्पार्टिक एसिड से ये बाइंड करते हैं। ASP इज व्हाट? ASP इज द अमीनो एसिड, राइट, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से इस मैग्नीशियम आयन की बाइंडिंग होती है, राइट। Why these two magnesium ions are important? What they do actually? As I told that these act as a cofactor. तो जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन है, तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी हाउ डीएनए पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, उसमें मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं, उसमें से 2 फॉस्फेट का डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 फॉस्फेट का रिमूवल होता है। तो एक मैग्नीशियम आयन ये क्या करता है, एक मैग्नीशियम आयन ये हेल्प करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में। जो दूसरा वाला मैग्नीशियम आयन है वो जो ये 2 फॉस्फेट हैं न्यूक्लियोटाइड के इस 2 फॉस्फेट को वो डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है, इस 2 फॉस्फेट को वो रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम आयन ड्यूरिंग द डीएनए replication, which act as a cofactor for the DNA polymerase enzyme. Now learners, यहाँ पे मैं आपको कुछ important facts बताना चाहता हूँ। There are certain fundamental rule of the DNA replication. Very important rule. First rule is the DNA replication is always semi-conservative mechanism. Now what is semi-conservative mechanism? ये मैंने आपको starting में ही बताया था, but again I am summarizing that कि जो हमारा पेरेंटल डीएनए है, राइट, दिस पेरेंटल डीएनए इट विल बी रिमेन इन ऑल दी जनरेशंस, राइट, और इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूव किया गया है। एंड द पर्सन हु हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन इट, दे आर दी मेजल्सन एंड शॉल। तो मेजल्सन एंड शॉल एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया था, जिसमें कि हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन और लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को यूज करके हमें ये पता लगा कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। तो इसमें बेसिकली जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हैवी नाइट्रोजन जो कि हैवी आइसोटोप्स और उसके बाद फिर लाइट आइसोटोप्स में इसको ग्रो किया गया और इसका डीएनए फिर सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और उसमें हमें ये एनालाइज किया, दे हैव एनालाइज दैट इन द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन योर वन विल बी इन द हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए का मतलब क्या है कि एक स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल होगा और दूसरा हमारा डॉटर होगा। तो उस डीएनए में ये दोनों लाइट एज वेल एज हैवी नाइट्रोजन के एटम्स इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं डीएनए में, और डीएनए के अंदर हमारा नाइट्रोजन बेस ऑलरेडी होता है। सो दैट्स हाउ इट कंप्लीटली प्रूव्स दैट द Michelson and Shaw experiment completely proved that DNA replication is the semi-conservative process. Again, very important fundamental rule is your DNA replication is the semi-discontinuous process. अब semi-discontinuous process का क्या मतलब है? It is not very important for you all to understand what is
meaning of semi-discontinuous. Don't be confused with the semi-conservative. Here is the semi-discontinuous. That means जो DNA replication होगा एक स्टैंड पे तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी, बट जो DNA का दूसरा स्टैंड है उस पे DNA की सिंथेसिस पीसेस के फॉर्म में होगी, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में होगी, उसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. तो लर्नर्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है. तो ये बाई डायरेक्शनल क्या मतलब है कि ये एक डायरेक्शन ये है एंड द सेकेंड वन इज दिस डायरेक्शन, राइट. तो दोनों स्टैंड में अगर आप देखें एक पे कंटिन्यूस सिंथेसिस है, बट ऑन द अदर हैंड on the different strand of the DNA is synthesized in the form of piece, in the form of fragment. तो ये fragment है ये, और इसी fragment को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी fragment. ओकाज़ाकी he was the person who first found that कि जो DNA का दूसरा strand है उस पे DNA के fragments के form में synthesis होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं ओकाज़ाकी fragment. So now I hope you understand the insight of the replication process, some of the important fundamental rule of the DNA replications, right? Like as I told you, it is a semi-conservative and semi-discontinuous process, as well as it is takes place at the origin of replication. So learner, with this I thank to all of you for listening, and we will continue this lecture in the future as well. Thank you so much for the listening. Thank you.